Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Coming out and send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies on the place. Visibility is zero, man. We are nearby Bangalore. Here comes the main road for which we have come here. Korean hotel itself, restaurant itself. That's how it looks. हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद एक राइड पे निकले हैं और ये ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की राइड है। इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग जाएंगे। पहले यहाँ से हेब्बाल जाएंगे और फिर हेब्बाल से एयरपोर्ट रूट की तरफ सीधा। और अभी आज मैंने एक नया जैकेट भी लगाया है जो कि सोलेस की कल ही मैंने ली है। अभी रास्ते में देखेंगे कैसा रहता है ये। बाकी जो प्लेस जहाँ जा रहे हैं ना वो काफ़ी ही बढ़िया प्लेस है और अभी रिसेंटली न्यूज़ में बोलो या इंस्टा में बहुत फेमस हो गया है। इट इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड पेनुकोंडा फोर्ट इट इज़। और द मेन थिंग इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, द मेन थिंग इज़ द रूट विच इज़ वेरी नाइस। और अभी मौसम बहुत ही ठंडा, आपको दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा कुहासा है। टाइम इज़ नाउ 7:15 और रास्ते में कैसी रोड है, कैसा व्यू है, सब कुछ आपको दिखाते हुए जाएंगे। और बाइक के भी मज़े लेते जाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। एंड आई होप कि आज आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। वो प्लेस डेफिनेटली देखकर आपको मज़ा आने वाला है और वर्चुअली आप भी इंजॉय करो। और ना एक्चुअली जैकेट जो है ना वेंटिलेटेड है, तो हवा अच्छी खासी हवा अंदर जा रही है। बट द थिंग इज़ कि यू नीड बिट एयर ऑल्सो। बैंगलोर की वेदर ऐसी नहीं है कि आप अभी वार्मर अंदर पहन लो। आई वॉज थिंकिंग टू वेयर वार्मर बट नहीं पहना। तो चलो फिर अब सीधा हेब्बाल पे ही मिलते। सो वी हैव रीच हेब्बाल। विल बीट अनूप इज़ हैविंग TRK 500, so he'll be riding that and he is with his family। तो ऑलरेडी कॉल आ चुका है। अनूप से तो मिल लिया हमने बट वो थोड़े पीछे थे और हम लोग थोड़े आगे। तो यहाँ पे रोड भी है बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक है, तो रुके नहीं, हम लोग सीधे बढ़ गए दोनों मिलके। वो आगे जा रहे हैं वहाँ पे। लेट्स मीट हिम। कई सारे बाइक जा रहे हैं आगे। माय राइट अनूप इज़ देयर। और आगे भी देख रहे हैं KTM एडवेंचर जा रही है और भी कुछ बाइकें जा रही है। हम लोग एयरपोर्ट की तरफ ही है। ये रोड पेनुकोंडा फोर्ट जाने के लिए आपको एयरपोर्ट वाली जो रूट है ना वही पकड़नी पड़ेगी, सीधा निकलती है वो। So this is KTM 790। I don't know how come he is riding 790। भाई साहब क्या कुहासा है, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली में राइड कर रहे हैं। मतलब इफ़ यू आर इन न्यू दिल्ली ना यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ फॉग इन द डेली रोड्स। शहर में इतना, मतलब वहाँ पे शहर में भी इतना फॉग रहता है और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे लग रहा है वी आर इन सो कोल्ड प्लेस, अनबिलीवेबल। ओह माय गुडनेस, कितनी ज़्यादा फॉग है ना, कुछ भी नहीं दिख रही है। अब तो मुझे ठंड भी लगने स्टार्ट हो गया, पैरों में ठंड लग रही है बॉस। I'm not able to take it to higher speed just because of the too much traffic actually. And range suddenly changed to 140 because अभी हमने पूरा कंटिन्यूस हाईवे पे चल रहे हैं ना, इसलिए। ओहो, इधर से मल्टी स्ट्राडा निकल गई बगल से। Ducati Multistrada। I think we have to put on the fog lights। Let's put on the fog lights। भाई साहब फॉग लाइट भी पता नहीं चल रहा है मेरे ना, वो वाइज़र पे पूरा फॉग आ गया था। इतनी ज़्यादा यहाँ पे फॉग हो रही है रोड पे। अभी पहली धूप की किरण दिखाई पड़ रही है।
अभी कैमरा बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। So I think we have nearby Nandi, so we'll straight go to Andhra border. अभी मैंने टॉप स्पीड थोड़ी बाइक की क्रॉस की फिर से 151। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
से ऊपर आपको स्पीड करनी है, 120 से ऊपर, सॉरी नॉट 100, 120 से ऊपर जाना तो थोड़ा सा लैग सा लगता है, मगर उसके बाद फिर तो इधर सुपर बाइक्स की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये है Z900 आगे, दो Z900 जा रही है, एक आगे भी है एक और एक पीछे भी है। और आई थिंक वी हैव टू गो लेफ्ट, तो हम लोग इधर से जाएंगे अभी। पूरी तरह से ना पहाड़ों से ही ढका हुआ ये एरिया, चारों तरफ पहाड़ है। और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई चालू हो गई है। एंड देयर गोज डुकाटी। साउंड जो है ना भाई, ये सब बाइक की वो मज़ा आता है सुपर बाइक की। और भी कई सारे राइडर्स आ रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, रोड इज क्लोज्ड एंड हियर गो and here comes the main road for which we have come here. This was the road, guys. What a road, man. Lovely, no? Ooh, और climbing भी है। ओह, ऐसे घाट रोड में पहली बार इस बाइक को मैं लेके आ रहा हूँ। ओ भाई साहब, क्या रोड है। ऊपर चढ़ते जाना है। एवरेज फ्यूल कंजप्शन देख लो भाई, 21 किलोमीटर। ओहो, क्या रोड है यहाँ पे। सी हाउ वंडरफुल इट इज लुकिंग। रोड्स आर क्वाइट वाइड हियर बॉस, स्पेशली मेड टू गो अप। आई थिंक ये जो रोड है ना, ये नई बनी है। और इधर देख लो भैया, पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ। और आगे भी कितनी सारी बाइक जा रही है, सुपर बाइक से ऊपर बाइक। एंड दैट वाज गोल्ड विंग। ओह, BMW दिस वन। Roads are just lovely, man, but you have to be a bit careful because there are bends and it's also going to height. I'm just taking a long turn. I don't want to lean more because top box भी है पीछे, थोड़ा रिस्क होता है। काफ़ी ऊंची है यार ये, देखो। Some hilltop, boss. Oh, full on. It's. I think that is the main point where we need to reach. In third gear also. It's able to keep at third gear. And here is the. Ooh, पैर नहीं रख सकते बेटा, पैर रखे तो गए नीचे, गिरेंगे। All that Kawasaki versus and BMW and many more. Oh, super man, super.
So that is the fort. Oh. So we'll park and then we'll go to that area. Yes, finally we have reached this Penukonda fort और अपनी गाड़ी लग चुकी है इधर. एंड देन अब इधर से आपको व्यूज़ दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहना. आई विल शो यू. सो दिस इज़ द रोड. बहुत लोग व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और भावना हैज़ टेकन आउट द कैमरा एंड देयर इज़ अनूप एंड बेबी एंड हिज वाइफ. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मैन, इट लुक्स सो नाइस. रांची वाली पतरातू डैम की याद आ रही है. पतरातू डैम में रांची में ऐसा सिमिलर ऐसे ही रोड है ना. आई थिंक इट्स बिट मोर बेंट और थोड़ी हाइट ज़्यादा है. आई थिंक सो, बट ऑलमोस्ट रोड इज़ सिमिलर. यहाँ पे सारी बाइक वाले लोग मिल जाएंगे. मैक्सिमम बाइक पीपल फॉर राइडिंग विल कम. सो वॉट एवर बाइक, जो भी बाइक आपको देखनी हो इस जगह आपको मिल जाएगी. विल गो दैट साइड एंड विल शो यू द व्यूज़. दैट इज़ द फोर्ट एक्चुअली. और इधर भी कई सारी बाइकें लगी हुई हैं. Only bike parking is there. So this is Ducati Scrambler. Many more. So I think that side is the remainings of fort. Nothing much to see here, but mainly for the rides and all, it's a good place. So I'll just try to show you a bit of the things here. So somewhat here some remainings I see. So many bikers are coming in this way also. I don't know. There's a off-road kind of thing here. So people will be going there. वहाँ भी कई लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं. But I don't think it's a good idea to go there. Nothing is there, only rocks. We are just exploring the place. Many people are coming on this off-road. Few people are trying to reach there. It is the Scrambler 400. It's quite difficult here to ride off-road trail, and we are not going to do that for sure. We are just curious to see how they will reach on the top. क्या मज़ा आया? कुछ था नहीं देखने के लिए. We just explored. We are heading towards this Korean restaurant today for our lunch. It's just in front of the entrance of Penukonda Fort Way, near the highway. You can also come and give it a try. We are stopping here at the Time Korean restaurant for our lunch break. So we'll just go inside and show you how it is. So this one is the restaurant, that is the Korean restaurant, and you can see the highway from here. Sitting is quite good. So this one is the highway from where we came. Bikes are parked below. Many bikers will also come. That is the Penukonda Fort where you have to go. And I'll just show you how this restaurant looks. So इधर भी sitting area है. This is quite airy. Feel open. And then this is the sitting. Here we all are sitting. And if you go, there's a seating area here also. You can put your legs down and sit. Either way, both way you can sit. So some rooms are here also. So many paintings are there. And that side there's a washroom, and this is the sitting area again. Nicely designed. I think it's some Korean theme designed restaurant. It's a Korean hotel itself, restaurant itself. So that's how it looks.
this is completely a Korean restaurant and it is meant for Koreans only. Why? Because Kia factory is nearby and there are a lot of people coming from foreign, I mean Korea, to this place, so they'll have lunch over here or dinner over here. So that's one reason you should know. So it is authentic thing what they are serving over here. So we have ordered some Thai noodles and what is it? Chicken ramen. Chicken ramen. Ramen. Salad is there in there. Chopstick. The salads. Can we do like this, like this, like this? Like You'll this? have it with Oh, sauce. you need these. That's for you. Then there is also kimbap. Kimbap Known as sushi. known as sushi. Okay. Anup will test and tell me how it is. कैसा है? Taste करो. I'm not experienced in this. Okay, cutting. I'm not able to handle this. ऐसे ऐसे फिंगर पे ऐसे पकड़ते हैं ऐसे. It's good, but it's different. Different kind of taste, right? Try this one. Taste one. Give. Okay, we'll taste this. Sauce. Have it with sauce. ऐसे नहीं You है. cannot bite it off. It's the whole thing you'll have to eat. Full dip करेगा. Right, yeah? Full dip कर. So कैसा है? This is tasteless. You're doing. I thought it's something tasty. It tastes like raw. Something raw taste is there. Not cooked. Boiled. Boiled one. So this tastes quite good. This is similar to as noodles. This is not healthy. Hmm? Yeah, outside. And now let's try this one. This is आप दिखा रहे हो कैमरा पे? this is what? Ramen. Ramen. Chicken ramen. So दो थोड़ा मैं टेस्ट करके बताता हूँ how the ramen taste. This is like Maggi. I felt this one was more better. That is better. So prices for this we have paid. कितना? How much for this? Hello? 500. I think it around $500. And for this also, everything is almost nearby 500, 600, 500, 600. Even you can find more pricey things here, but I think you can try this one. This is better. There's also this chicken fried rice which we have ordered. I'm just planning to drink something. Maybe we'll take this Monster. So this is a Korean supermart. Below the restaurant there is a Korean supermart and you'll find multiple things which are not India made, I think so. So that's what we'll find here. So multiple things you'll find here, chocolates, biscuits, all are like non-Indians, all are imported one. Then this one, I don't know what exactly are those things, but what is this? Okay, this is something not really Indian food. This सब क्या है? Fish, dried fish. When you can find the meats over here. So the store is called Seoul. Wow, this kettle is good. Seoul store. ये जस्ट नीचे ही है रेस्टोरेंट के, आप यहाँ भी आके चेकआउट कर सकते हो. कुछ कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी. दिस ऑल आर इम्पोर्टेड वन आई बिलीव. सो सबके ऊपर कोरियन में कुछ कुछ लिखा है. ऑल्सो फाइंड कोरिया कॉस्मेटिक्स. दिस ब्रांड विल नॉट फाइंड anywhere I think so. Only this store is having all this different brand.
This is tomato nurturing soothing gel. What are you saying? So even the detergents and all that things are from Korea, I believe. Hair treatment. So some shampoos are there. Body wash, hair treatment. Mm-hmm. You have this, what you call? It's Ambipure is common, but this all are not common. See, hair Skin. Khadi is also there. Some Indian brands as well as some. Store is below the restaurant which I was talking about. So this is the store. So guys, वहाँ लगी है अपनी गाड़ी. It look good with that lights. So guys, we have just stopped here for looking at the Kia factory. It's quite big. You can also see it when you're passing this route near this fort where we went, Penukonda. And here is our bikes. See, this whole area is like Kia factory. Roads are quite good, so that is the best part. And here is I hope you must have enjoyed the whole vlog today and whole ride. So अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना and share with your friend who must be looking for a good ride and experience all these things. So what we showed in this video. Let's see you in another video. Thanks for watching. Till then, stay safe, keep riding, keep traveling. Bye bye.